अंतरिक्ष केंद्र से आप सभी दर्शकों का हार्दिक नवंबर 2022 को भारतीय मानवीय सुचारू रूप से जारी हैं। कुछ अंतिम गति इस पर रहा है और अब हम उड़ान से 24 मिनट की दूरी पर हैं। Namaskar and good morning viewers. You are watching the live telecast of launch of PSLV C-54 casted by DD National. The live commentator Shri Vikas Varnkar. We bring to you a curtain raiser video. ISRO's workhorse PSLV in its flight C-54 is ready to launch EOS-06 satellite. Along the mission is targeted to launch from Satish Dhawan Space Center, Shar on 26 November 2022. EOS-06 is third generation satellite. OSAMSAT-3 spacecraft is a third generation satellite to study the bio. The satellite is realized on I-1K bus having liftoff mass of. It is an operational class spacecraft with complete redundancy. Namely, Ocean Color Monitor OCM-3, Sea Surface Temperature Monitor SSTM, KU Band Scatterometer SCAT-3, Argos. The OceanSat-2, which was launched during September 2009, configured to cover global oceans and provide continuity of ocean color data with global wind vector and characterized nationally and internationally on various areas. Oil spillages, wind vector products. The EOS-06 is envisaged to observe ocean color data, sea surface temperatures. The satellite also supports value-added products such as land-based geophysical parameters. The primary satellite orbit change is planned by using two Orbit C-54 vehicle. The passenger payloads PPLs. India-Bhutan SAT, a collaborative mission between India and Bhutan, is INS-2B satellite for Bhutan by Space Application Center and AB. The other three payloads are commercial payloads from NSIL. The Anand 3 axis stabilized nanosatellite from Pixel India. Astrocast is a 3U spacecraft with USA. The Thai Bolt is a 0.5U spacecraft bus that includes a communication payload from Dhruva Space using their own orbital deployer with a minimum life. You have just heard from the project director of the primary satellite EOS-06 and the details about the passenger payloads. The launch is scheduled to take the first launch pad at Satish Dhawan with PSLV XL carrying EOS-06 2.93 kilometers altitude with 98 point circular orbit with 9 in the year 2022. Apart from the work and LVM-3 successfully deployed 36 satellites in its first commercial mission. CNC2 TTC Director, all strike elements are ready to support PSLV C-54 EOS-06 INS-2B mission. अब हम उड़ान से 18 मिनट इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में EOS-06 नामक 1115 केजी का भूप्रेक्षण उपग्रह है, जिसे लगभग 742 किलोमीटर की वृत्ताकार मुख्य उपग्रह के साथ में सफर कर रहे हैं। इस मिशन में सर्वप्रथम EOS-06 उपग्रह को 742 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने के पश्चात और यह ऑर्बिट कक्षांतर ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स की मदद से किया जाएगा। यह मिशन लगभग 7005 जैसे यान को पावर ऑन करना, सभी तंत्रों तथा नियंत्रण प्रणाली की स्वास्थ्य जांच करना, तरल नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू करना, उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी आवेशन करना आदि सभी गतिविधियों को संतोषजनक तरीके से पूर्ण किया जा चुका है। The countdown for PSLV C-54. The countdown and launch of PSLV C-54 EOS satisfactorily. Based on the clearance, favorable weather conditions, Mission Director hereby authorized 06 mission at 11:56 hours. Roger. All stations to note. From Mission Director,
vehicle director hereby authorizes to initiate Automatic launch sequence initiated for PSLV The C-50. of rocket are carried out from the ground computers. Integration video. That's Director SDSC Shah Sri A. Rajarajan flagging off the nozzle end segment from the preparation building to the launch pad. प्रथम प्रमोचन मंच पर लाया गया है। क्रेन की मदद से इसे उठाकर मोबाइल सर्विस टावर पर रख दिया जाएगा। Conventionally, positioning of the nozzle end segment on the launch pad marks the beginning of the launch campaign. The S-139 core stage comprises of 5 segments. The case-bonded HTP, each segment weighs about 30 tons. प्रथम चरण PSLV का S-139 जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है। PS2 redundant chain actuation इसमें कुल 5 सेगमेंट्स की मदद से यह मोटर तैयार किया जाता है। प्रथम हमने देखा नोजल एंड सेगमेंट लगाया गया, उसके ऊपर में यह मिडिल सेगमेंट लगाया जा रहा है। यह कार्य पूरी बारीकी, सतर्कता तथा धैर्य के साथ पूर्ण किया जाता है। While the hardware realization, you can see the crane lowers the segment down around. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यह सारी प्रक्रिया पूर्णतः परिपक्व हो चुकी है तथा कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता में during the preparation of solid propellant segments hazardous nature. You can now see on your screens the head end segment being hoisted for integration on the middle. PS3 actuation completed. संयोजित कर दिया गया है और यह है इग्नाइटर। प्रथम चरण का इग्नाइटर है, यही वो इग्नाइटर है जिससे पूर्ण मोटर पे का प्रज्वलन होगा। The igniter for the first stage being assembled. It is assembled on the port of the head end segment. Pawn is in the assembled condition. 54 में 6 की संख्या में होंगे। दूसरा स्ट्रैप ऑन लाया जा रहा है और इसे For the PSLV's mission today, 6 strap-ons are there. These are 12 meters long and contain 12.2 tons of propellant each. सर्विस टावर में किए जा रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म की कार्य में लाई जाएंगी। That's the tank of SITVC that stores fluid for the secondary injection for the thrust vector control. यान के प्रथम चरण में दिशा निर्धारण के लिए SITVC और RCT का प्रयोग किया जाता है। उसी को अभी आपने देखा संयोजित होते हुए। -9 minutes. अब यह इंटर स्टेज आ रहा है। On your screens now is the interstage between the first and second stage. It provides enclosure for the nozzle of second stage and interface for the small retro rockets to slow down the first stage after its separation. जैसा कि हमने बताया, अभी आप देख रहे हैं नोजल PS2 स्टेज का। PS2 तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसके नोजल जंबल टेस्ट किया गया और सभी जांचों के पश्चात इसे भी लॉन्च पैड लाकर पूर्ण संयोजित प्रथम चरण पर संयोजित कर दिया जाएगा। The engine for the PS2 was tested for its gimballing operation and several other preparatory activities are carried out on the stage
before moving it to the launch pad for integration. यह इंजन जो आप देख रहे हैं इसका नाम भी विकास इंजन है। यह द्वितीय चरण। यह तृतीय चरण है जिसे हम HPS 3 के नाम से जानते हैं। यह भी पूर्ण जांच के पश्चात PS4 के साथ संयोजित Facility in the launch complex and brought to the launch pad. As we have told you, safety is of paramount importance at all stages of launch vehicle operations. The location of subsystem preparation facilities is a trade-off between the proximity for transportation and safety in case of off-nominal situations. बहुत ही धीमी गति और पूरी सतर्कता के साथ स्टेजेस को लॉन्च पैड लाया जाता है। क्रेन की मदद से इसे द्वितीय चरण के ऊपर में संयोजित किया जाएगा। Vehicle on internal power. पूरे कार्य के दौरान गुणवत्ता तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। -6 minutes. The primary satellite for the mission, EOS-06, being prepared and closed in an environment-controlled container. This is important to External safeguard power the switch on. sensitive electronics Side are coefficient ensured loading in the started. launch complex. मुख्य उपग्रह EOS-06 यान के सबसे ऊपरी छोर पर समायोजित किया जाएगा। After the integration of primary satellite and उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित 700 मीटर पीछे सरका दिया जाता है। पूर्णतः तैयार PSLV C-54 सज्ज है प्रमोशन के लिए। the mobile service tower PSLV C-54 EOS-06 mission ready for liftoff. अब यान का पूरा नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास है। इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम चलाता है। PSLV C-54 के प्रमोशन को देखने के लिए Countdown is in progress Onboard for computer in PSLV flight mode. C-54 and ALS is currently on. During the countdown, critical activities into the stages, battery charging and checks for the launch vehicle and satellites are carried out. -3 minutes. की दूरी पर 7,000 are currently watching the launch this time. कुछ ही दिन पहले श्रीहरिकोटा पर उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय था, लेकिन आज पूरी तरह -2 minutes. ISRO awaiting its 87th overall launch and PSLV awaiting its 24th flight. We are 1.5 minutes away from the launch. आए हैं आज इस PSLV C-54 के प्रमोशन का आनंद लेने। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट की दूरी पर सर्वप्रथम हम बूस्टर S-139 का प्रज्वलन होगा। -50 seconds. PS2 VHPP open. -30, -25 seconds. PS2 -7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Textbook liftoff of PSLV C-54 EOS-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-54 बहुत ही रोमांच S-139 के साथ स्ट्रैप ऑन बूस्टर का
बहुत ही रोमांच का क्षण। PSLV C-54 EOS-6 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। The core S139 stage, together with the 6 strap-ons and 68 kilonewtons of the groundlet strap-on separation. Next flight event will be the separation of airlet strap-ons. Strap-on को Telemetry are getting the trajectory information. Stage separated, second stage engine started, प्रथम चरण second stage performance normal. The first stage, having completed its duration, has been separated, and the second stage, PS2, has been ignited and commenced its operation, and it is developing nominal thrust meters in length and 2.8 meters in diameter. The PS2 stage develops 803 kilonewtons of thrust by the Earth storable Payload liquid fairing propellant separated. combination. Cross dense atmosphere. The payload fairing अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। यान अपना दिशा निर्धारण सेंसर्स की मदद से करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। Second stage performance normal. सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए The PS2 stage is a pump-fed stage and has Vikas engine, which has proved its reliability in every mission. Vikas द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें 152 सेकंड्स का होगा। present mission is 152 seconds. द्वितीय चरण के पश्चात यान की कुल ऊंचाई 100 Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण HPS-3 चरण प्रज्वलित हो चुका है। 7.65 tons of HTPB based propellant. HPS-3 develops a maximum vacuum thrust of 239.6 kilonewtons. Plus 5 minutes. यान पूर्णतः पूर्व नियोजित Burn duration of 121 seconds. तृतीय चरण HPS-3 फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें कुल 7.6 टन का प्रणोद होता है तथा यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Normal. तृतीय चरण करीब 121 सेकंड तक जलकर बंद हो जाएगा और उसके पश्चात करीब 100 सेकंड तक कोस्ट फेज जारी रहेगा। Plus 6 minutes. पूरे तंत्र सामान्य We are 6 minutes 15 seconds into the launch. Third stage operation currently in progress. Third stage action completed. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करते वर्तमान में सापेक्ष गति 6 किलो Confirmation of the completion of Vehicle HPS-3 performance burn normal. is being 7 developed. minutes. However, the rocket is being controlled through the two clusters of 50 Newton. These thrusters give propellant from the PS4, the coast phase for present mission. जिसमें पूरा यान पूर्व निर्धारित तरीके से दिशा निर्धारण करते हुए कक्षा की और उसके पश्चात चतुर्थ चरण पूर्वक पृथक Engine started. And the ignition commencement of the fourth stage. Pressure-fed twin engines that burn monomethyl hydrazine as fuel. चरण का प्रज्वलन सामान्य हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण को Plus 9 minutes. 2.5 टन का ईंधन होता है जो कि दाब भारित इंजन द्वारा 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इसमें ऐसे दो इंजन्स लगे होते हैं। Burn duration of PS4 for this mission is 487 seconds. It has 2.5 tons of propellant loading.
and develops a maximum vacuum thrust of 7.33. इस चर करीब है, यानी कुछ 8 मिनट निर्धारित है, प्राप्त की जा सकेंगी। Meanwhile, let me tell the viewers about the satellite. It is a third generation satellite in the OceanSat series. It has among its payloads ocean calorimeter SCAT-3 and Argos, wind vector data to sustain the operational surface temperature and more number of bands in the optical to develop improve related algorithms, the mission utility. चतुर्थ चरण का निष्पादन सामान्य है। यान अपेक्षित पथ को अनुसरण करता हुआ मुख्य उपग्रह EOS-06 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। EOS-06 ओशनसैट श्रेणी का पेलोड की मदद से वृहद अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना है। टेम्परेचर मॉनिटर, KU बैंड स्कैटरोमीटर और अर्गोस का प्रयोग किया जा रहा है। अनुप्रयोगों में सुधार के लिए EOS-06 अतिरिक्त उपलब्ध कराएंगे। इससे संबंधित एल्गोरिथम्स को डेटा सेट्स की मदद से उन्नत अनुप्रयोग क्षेत्र में विकास लाएगा और Two numbers of Thibault satellites. It is a 0.5 U spacecraft bus that includes a communication payload to enable rapid. It also demonstrates the satellite shall be deployed by using Dhruva. सामान्य प्रदर्शन करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर वर्तमान में त्रिवेंद्रम स्थित ट्रैकिंग सेंटर हमें डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। भारत के प्रोमोचक रॉकेट की श्रेणी में तृतीय पीढ़ी का रॉकेट है। अक्टूबर 1994 में PSLV की प्रथम सफल उड़ान के बाद PSLV एक विश्वसनीय तथा बहुमुखीय उपग्रह प्रोमोचक रॉकेट के रूप में है। PSLV विभिन्न उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम तो है ही, इसके लिए वह मल्टी पेलोड एडेप्टर का प्रयोग करता है। न सिर्फ विभिन्न नेतभार बल्कि विभिन्न कक्षाओं पर भी उपग्रहों को स्थापित करने में इसके प्रयोग कर ऑर्बिट 1 जो कि 700 तक वह कुल 15.2 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ईंधन के रूप में मोनोमेथाइल हाइड्रोजीन तथा ऑक्सीकारक मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज किया जा रहा है। Close to 408. चतुर्थ स्थितियां प्राप्त कर मुख्य उपग्रह EOS-06 का अंतक्षेपण किया जाएगा। When the correct attitude also is attained, the primary satellite EOS-06 डिग्री के झुकाव के साथ 7.5 launch and injection of primary satellite EOS-06. Range Operation Director. Mission is continuing with two phases of orbit changing thruster, that is OCT firing. The first phase of OCT burns takes place in the non-visibility. After these two phases of OCT burning, remaining 8 satellites will be separated in the visibility period. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 13:30 hours IST. Handing over to Mission Director. ISRO Sri S. Somnath. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. ये बहुत ही कपल है। Accomplishment of the PSLV C-54 EOS-06 satellite at its intended orbit. Stages and functions were exceedingly good. And congratulations, successful mission in the series of its satellite, which is just deployed its solar panels
Sure, it will continue its further phases of actions. Change of orbit of the upper stage. Satellite from Pixel is there. Thigh bolt 1 and 2 are there. And also we have Astrocast 4 satellites on board of PS4 stage currently. So it will go around the Earth. Now the upper stage has small engines. These engines will fire to bring the orbit to a sun-synchronous polar orbit. And this happens, and this process happens some part in the visibility of our ground team, continuing the work in the ground control center and PM today to look at the separation process. Meantime, let me invite the mission director to have his observation on the mission and to talk to you, Mr. Biju. Achieved the first part of the mission, PSLV C-54 EOS-06. EOS-06 deliver. It is because of the excellent team effort put in by all team members here. That is, we'll here soon. I want to express my sincere gratitude to Team ISRO for having achieved this mission. Team ISRO encompasses all our team members, our project team. Thanks to Team ISRO and my big salute to Team ISRO. Let us wait impatiently, but definitely success is going to be ours at 1:30 p.m. Thank you very much. Thanks to all. I would like to invite mission director, spacecraft director, to speak a few words. Yeah. My heartiest congratulations to PS deployed, and our health of the satellite is normal. It's an advanced third generation satellite to study the biological parameter of zones, weather forecasting and this one. Wind velocity and cyclone detection, cyclone tracking, and this maritime security, and locating the bioships, and it has full its capacity. And the major achievements in the satellite is we have used indigenous data. I am very confident that the satellite will deliver the very good product, and it will meet our user community, whatever the requirement. And from second day onwards, we are going to start the payload operations, and our ground stations is Antarctica and NRC is ready to receive the data and give it to user community. I am very much thankful to for throughout the realization of the full project. Thank you, sir. And I thankful to my URIC director so for his review, continuous help, and full realization, and SAC director for his excellent payload, and other directors also. Actually, this satellite is dedicated and innovative ideas they give. So I thank departments and ministries of Government of India. And I would like to take this opportunity to thank all of them for the commitment to make use of the satellite. Thank you once again, and we will come back with the second phase of the mission for